So, I mean, these things we have done already. You can take it as a review or maybe to clear some more concepts. तो यहाँ पे हमने इस equation का कर लिया, and then you get this form of the equation by using the calculus relationship. ठीक है? And we already know that this is the Ampere's law. ठीक है? और ये आपका Gauss's law है, free space. And we did some steps to get these form of the wave equations. ठीक है? और इस wave equation में you know that this is electric field and permeability and permittivity. And this side is depending on the time, and this side is depending on the position or space. And we also did some work to find out this C is equal to 1 over under root permeability over uh, permeability over permittivity. और ये आपके पास the wave equation you get to this form. ठीक है? So wave equation, as you know that if you want to study the propagation of the waves, you need to know and you need to study the wave equation. So here in this slide, what you see harmonic waves. Okay, these relation you already know if you have studied a little bit waves and oscillation or this kind of subjects. So 1D traveling जो function है आपके पास वो ये है, ठीक है, velocity position, and one dimensional जो आपके पास wave equation है that would be like this. But here we are not using C because it means it's not a free space. ठीक है, it passing through a certain medium which is not a free space or x-axis. ठीक है, इसलिए इसको one dimensional जो है wave equation कहेंगे. ठीक है. So these are the solution. Here these k you already know that is a propagation vector or wave vector or wave number. ठीक है. 2 pi over lambda जो k की value है 2 pi over lambda. The propagation constant can also be said, but it depends upon the wavelength. ठीक है, और ओमेगा हमारे पास जो है that is angular frequency. Snapshot in time जो है what it shows is simply the snapshot of one wave. ठीक है, इसका ये wavelength, ठीक है, और ये इसका amplitude है. ठीक है, t is a constant, time is constant here. ठीक है, so it satisfies these equations. And what's written in the red, what wave equation tells us that how the displacement y of a string, let's suppose there is string actually, can possibly change as a function of position and time. ठीक है. So if you take this equation, ठीक है, यहाँ पे जो आपका y है, ठीक है, the displacement, this is a displacement. ठीक है, कोई string ले लिया है, any string here, ठीक है, और y is a displacement. तो ये जो displacement है चेंज कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, टाइम के लिहाज से भी और पोजीशन के लिहाज से भी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट y.
Okay, so in this equation here, plane waves and spherical waves, ठीक है? Plane waves and spherical waves, different equations. You can see here, this is a solution of the equation or equation how to interpret. यहाँ पे आपका ये है propagation vector है, ठीक है? And A is amplitude here, time and the frequency, ठीक है? And here the same equation can also be written in this form. यहाँ पे I iota जो इसका imaginary part है, ठीक है? And if you see the spherically waves like this, then it can be written like this. This is the radius, and rest of the equation will be like this. So spherical waves mean waves are generating like this. ठीक है? K actually, as I mentioned many times, is very important. ये आपकी propagation जो है उसको बताता है, ठीक है? Propagation की direction को बताता है. And constant, इसे कहते हैं propagation constant भी कह सकते हैं इसे propagation. So it shows the direction of the wave where it moves. So usually it represented with the K. Okay, so here phi is any function. ठीक है, 3D wave equation है, phi is any function. Want to find out the phi, इसकी जो position है या इसकी जो displacement है with respect to the space, with respect to the time. ठीक है, और अगर आपको याद हो, we derived this equation which is Helmholtz equation, which is called the Helmholtz equation. ठीक है, and basically this one is here, it's space or position dependent. ठीक है, and it has two parts, time and space. ठीक है, we can separate as we have did this one in the previous lecture or before that. तो इसमें जो है आपका ये space part है और ये आपका time part है. ठीक है, तो इसको separate अगर करें तो that is like this. It depends, I mean, if you want to use as a the time part or if you want to use a space part. ठीक है. So this one, which I already mentioned when I was trying to explain this Helmholtz equation. This Helmholtz equation basically, there is no time dependency here. ठीक है, तो ये time independent equation है, Helmholtz equation. So if you want to know the position of a certain wave propagating, तो उसकी सूरत में इससे जो है we use this equation. But if we need the time information, then there will be other possibilities. But Helmholtz equation, it has its importance to solve many things and to simulate waves, different form of the waves. अच्छा, मीडियम के हवाले से बात हो रही थी पहले भी. Ideal medium where the wave can propagate through, उसे हम कहते हैं लीनियर है, नॉन डिस्पर्सिव है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक है. ठीक है, तो isotropic, I mean, it's like you can say it's independent of the direction. ठीक है, isolated so you have, it's independent of the direction. ठीक है, linear है, ठीक है, is not, I mean, it's not a like it has non-linear components or non-linearity somewhere. Dispersive भी नहीं है, ठीक है, और homogeneous है. ठीक है, so the simplest case of linear, non-dispersive, homogeneous and isotropic
जो आपके पास मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडिया, we simply follow this equation, ठीक है। P एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोलराइजेशन हो गई, ठीक है। एंड again it's mentioned here an isotropic medium whose electromagnetic properties such as refractive index is same in all the directions, ठीक है। Isotropic media, I mean it's important to discuss when we discuss about the light waves. जब लाइट वेव्स आपकी फाइबर ऑप्टिक्स में से पास करती हैं, तो वी हैव टू कंसीडर दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ये जो आपका द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समथिंग लाइक दिस, सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। इसमें ग्लास भी हो सकता है, इसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, इसमें वुड भी हो सकती है, व्हाटएवर, ठीक है। इफ वी मूव फर्दर, एक स्केलर कांस्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी, ठीक है। और इसको शो किया जाता है काई से, हम लोग चाय भी कहते हैं इसको, ठीक है। एंड दिस इज अ लीनियर मीडियम, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एंड देयर इज नो लीनियरिटी, नो लीनियरिटी हियर, ठीक है। एंड if you see this red portion, what is written here? Just a minute. So a linear, non-dispersive, homogeneous, and isotropic medium can be characterized by the single constant, which is electric susceptibility, ठीक है। लेकिन अगर नॉन लीनियर हो, दैट इन दिस केस यू हैव मेनी अदर कंपोनेंट्स। लेकिन एक लीनियर मीडियम जो है, दैट यू कैन ओनली, आई मीन इफ यू वांट टू स्टडी फुली, then you can characterize with this constant, ठीक है। this constant is chai or kai, whatever, different people pronounce in a different way, ठीक है। So this slide what we see actually, medium. So when the electromagnetic waves are propagating, what kind of medium it is? तो अगर तो सिंपल मीडियम है, दैट इज नॉन लीनियर नहीं है, लीनियर है, और नॉन नॉन डिस्पर्सिव है, डिस्पर्सिव भी नहीं है, एंड देन होमोजेनियस एज वेल, आइसोट्रोपिक भी है, सिंपल। एंड वी कैन स्टडी द, और वी कैन कैरेक्टराइज जो मीडियम है, जिस मीडियम में से गुजर रही है आपकी वेव्स, वी कैन कैरेक्टराइज दिस मीडियम इस इलेक्ट्रिक सस्टेबिलिटी की वजह से, की मदद से, ठीक है। So whenever we use a medium like it's a fiber optics or it's a waveguide, microwave waveguide medium, and whatever kind of medium is there, तो उस medium को जो है, अगर तो linear है, ठीक है, you simply assume that the medium is linear. Start from simplicity. So this value, sorry, this constant, this one is very important to characterize the medium, ठीक है। And whenever you study the waves, you have to study a little bit about the medium, because waves जो है वो आपकी travel करेंगी किसी medium में, ठीक है, वो propagate करेंगी किसी medium में। So to know about the medium is somehow is important. Okay, so equations: linear, non-dispersive, homogeneous, and isotropic media. So this equation we already know, and this one we already know as well.
ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड दिस permittivity, it can be modified in this way if the waves are passing through a certain medium. ठीक है, this one in the free space, ठीक है, but this one is medium. ठीक है, so we can also find out dielectric constant by using this one. So this one can be find out if we know these values, dielectric constant. So this is the Maxwell's equation, which we know already, and basically it's Faraday's electric field and magnetic field. Okay, and it can also be written in this form. ठीक है, in case of a magnetic intensity, and this is also one of the Maxwell's equation. ठीक है, यहाँ पे displacement, electric displacement, and we can also write this equation in this form. ठीक है, and this one is also Maxwell equation, and we can write in this form as well. The free space, ठीक है, we are not considering this thing here, which is a volume charge density. ठीक है, magnetic field no poles. ठीक है, and we can also write like this. ठीक है, so wave equation we saw in the last this slide here, here. ठीक है, you know that we can also write this wave equation in this form. ठीक है, see जो है velocity of light. If you move to this slide here, यहाँ पे वही इक्वेशन है. ठीक है, as I mentioned before, but here u is any function. ठीक है, ये 1D या 3D equations wave है. The difference here कि अगर तो हम c use करते हैं, which I mentioned already in my previous lectures, then it means that we are considering in free space. And if we use this v here, then it means we are considering the waves propagating in a medium. ठीक है, और c किसके बराबर होता है? We already know that this thing, and v is equal to this one. ठीक है, and refractive index can also be like this, and if we further modify, it can be like this. ठीक है, so in case of free space, these are the quantities. ठीक है, or it depends on the medium definitely, permeability or permittivity. और अगर तो wave propagate कर रही है in a certain medium, then you have to take this thing. So उस सूरत में आपका refractive index becomes important. ठीक है, refractive index जो है उसकी importance हो जाती है. हमें refractive index जो है, we should know the refractive index कि किस medium में move कर रही है. ठीक है, and further if we want to, I mean like to find out the refractive index, we can use if we know this value as well, which is depending on the material or the medium. Here we just generalize the equation. Okay, ये electric field यहाँ h होता है. ठीक है, so we generalize. I just put the value of u here, which is any function. Okay, monochromatic electromagnetic waves. ठीक है, monochromatic means it has a, it's not exactly a single wavelength, and but assume that monochromatic means a single wavelength somehow. ठीक है,
और एक ही frequency. You can say, but exactly it's not like monochromatic is not 100% with a single frequency. ठीक है. So monochromatic electromagnetic waves, we know that this is a space portion, this is a time portion here. ठीक है. Or we can also write electric field and magnetic field like this. These Maxwell equations, we already know that these one, and we studied in the last lecture, if you remember. If we put the value of E, not put actually, if we find out this here and solve it with respect to time, then you get this one. ठीक है. और इसी तरह अगर H की value है, then you get this one. ठीक है. That's we have done actually in the last lecture, and that would be as it is, somehow showing only the function of space, no time here. ठीक है. और यहाँ पे with respect to time, Helmholtz equation, and Helmholtz equation can be written in general form here, or the UR जो है that can be is equal to ER or HR. It depends whether you are studying the magnetic field or electric field or both. ठीक है. If we are studying both the electric or magnetic field, then we supposed to find out the solution separately for electric field and magnetic field. ठीक है. और ये आपका propagation wave number है, wave constant है. ठीक है. Here plane electromagnetic waves. Okay, so plane electromagnetic waves. Okay, so plane waves, not the spherical waves here, plane waves, same thing. These things, we already know that these are the space part and time part, position or time. And when we substitute it, okay, so these values in the Maxwell equation, then we get this one, you know, already, okay. And if you write in a magnitude form, that can be like this. Okay. E, H, and K, basically they are orthogonal, mutually orthogonal to each other. Okay. And like you can see in the diagram here, in the figure here, कि आपकी अगर तो if this is आपका K है जो propagation, तो यहाँ पे आपकी electric field होगी. ठीक है. Or it can be magnetic field like this, but magnetic field is usually in the form of curl. ठीक है. लेकिन होती perpendicular to electric field. So electric field and magnetic field perpendicular, and K is also perpendicular. So K and E, electric field and K, they are perpendicular to each other, and magnetic field and K, they are also perpendicular to each other. Okay. So whenever the waves are moving, the electromagnetic waves, then it has to be like in this form. Okay. To carry the information or something like this. So light is also electromagnetic. So if the light is also electromagnetic, it means it has electric part, electric field part, and magnetic field part as well. ठीक है. और K जो है वो इसके propagation को show करता है. ठीक है. Boundary condition we studied already, and why boundary conditions are important? Because when wave is moving, the electromagnetic waves, like it moves from one medium to another medium, and we need to know that
what will be the behavior of electric field and magnetic field when it moves from one medium to another medium. ठीक है. Or boundary conditions are very important in electromagnetic electrodynamics actually. Whenever we study the electromagnetic waves and fields, ठीक है. And here you can read as well that boundary conditions are important to understand when working with electromagnetic fields in a conducting cavity and waveguides. Excuse me. तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आप बाउंड्री कंडीशंस को स्टडी करते हैं, एंड आई मेंशन बिफोर एज वेल, they're important to understand because practically, excuse me, practically if we want to study the electromagnetic waves in a waveguide, and it can also be in a conducting mediums, conducting cavities जो conduct करती हैं उसमें से भी wave गुजरती हैं sometime, and also the fiber optics. ठीक है. So we need to know इनकी जो है how do they behave one side of the boundary and other side of the boundary, whether they are continuous, discontinuous, or whatever it is. Conducting cavities, you can see like if you take the copper wire, so the copper wire, the electromagnetic waves are traveling, so the copper is conducting medium. And waveguides for the microwaves usually we use, these are not conducting mediums. ठीक है, वो conductor नहीं होते usually. A certain kind of material is used which is not conducting. ठीक है. And here, if it's not free space, if it is a medium there, ठीक है, कोई volume charge density, कोई charge medium है, ठीक है, then this equation will be like this: magnetic field here, here, and this one also a source. ठीक है, this one also source from where the electric field is coming. This is source. Current density, ठीक है, from where the magnetic field is coming. ठीक है, तो अगर तो ये sources ना हो, the equation is very simple. ठीक है, अगर ये sources नहीं है, we already know that this one will be like this, and this one is already, and is like this, and that would be curly D over curly D, अगर कोई source नहीं है. ठीक है. So this one and this one, they are free charges and the current. ठीक है, if there is a source. So if you remember, we studied, this kind of figure or diagram. We drew actually this one, कि एक मीडियम है और एक दूसरा मीडियम है. ठीक है, उन दोनों मीडियम के दोनों तरफ we want to see कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है. ठीक है. And this kind of structure when we draw, we call it pill box. ठीक है, एक पिल की तरह का एक बॉक्स है. And this one, del dot D, the electric displacement, space, उसके जो position components हैं, inside this thin pill box. ठीक है, ये जो पिल बॉक्स है आपका, ये उसके अंदर, ठीक है, चार्जेस हैं something like this. And this pill box is very thin. Very thin means कि इसकी जो ये जो इसे आप चौड़ाई नहीं, इसे आप कहेंगे कि
something height. It's like very small. ठीक है, almost flat. It looks like this pill. And permittivity है, ठीक है. And lies on opposite side of dielectric surface. एक इस तरफ है, एक इस तरफ है इसकी सरफेस जो पिल बॉक्स की है. ठीक है. So what we have proved actually in the previous lectures, that this condition and this condition, this is for the electric field and this is for the magnetic field. Okay, we solved these things. I mean, if you go back to the lectures, ये आपकी जो magnetic field और electric field. ठीक है. So what it shows that the magnetic field here, ठीक है, ये आपकी B2 is equal to B1 है. ठीक है, is equal to 0. So it means it's continuous. अगर ये किसी के बराबर आ जाती हैं, then it means it's not continuous but it's discontinuous. कहीं ये discontinuous हो रही है. So same thing here, जो D1 और D2 है, that is equal to, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसकी सरफेस पे कोई चार्ज है. ठीक है. So it means that this thing is not equal to 0. ठीक है. और so if it is not equal to 0, it means these D1 and D2, they are discontinuous, the both sides. ठीक है. They may change the form from when enter from one medium to another medium. They may change their strength. They may change their direction. ठीक है. And n का आपको पता ही है, that is normal, normal to the pill box here. ठीक है. और surface charge density है sigma, and we are not considering the volume here. ठीक है, वॉल्यूम नहीं हम इसीलिए कह रहे हैं, ये जो हाइट है that is very small, it look like a flat. Okay. And the same thing here, you can write like this, if n is a normal vector, ठीक है, और n normal vector ही है. ठीक है. And what is written here, the normal components of the magnetic induction B is always continuous, and the difference between the normal components of electric displacement D is equal in magnitude to the surface charge density. ठीक है. In case of D displacement, electric displacement, the difference between the first medium and the second medium is equal to the surface charge density. ठीक है. So the magnitude of the surface charge density. ठीक है. And in case of a magnetic field, ये जो difference है is equal to 0. तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी दूसरी. So how it comes in the first medium, it will go to the second medium, it will continuous. But in case of electric field, there is something which is not equal to 0. So there is some change, and that is the surface charge density. ठीक है. अब in this slide, on this slide actually, now we consider a kind of, not a pill box, but a kind of a rectangular circuit. We have seen this thing actually, we have studied these things. Here I'm just trying to give you some review and some physically how you can explain the things. यहाँ पे it's very small kind of rectangle. ठीक है, narrow भी है और rectangle loop है. ठीक है, it's kind of loop. और section of the boundary. ठीक है, इसका कुछ हिस्सा बाउंड्री के एक तरफ है, कुछ हिस्सा बाउंड्री के दूसरी तरफ है. This is the interface or the boundary. So longer side, these are the longer side here. So the longer sides are in the region 1
N2, ठीक है, and उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं that are discontinuous actually, discontinuity है. We are not considering that these sides here, this side and this side, ठीक है. Our concern is these two. The width of this rectangle, they are saying, is so small, and these two sides are very close to each other. ठीक है, ये बहुत ही छोटी साइज है यहाँ पे, ठीक है. So the both sides of the equation, if we use the Maxwell's equations, and we already found out कि this is your electric field, ठीक है, and this is your magnetic field, ठीक है. This electric field is equal to 0. It means it's continuous, ठीक है. And जो आपकी magnetic field है, that is equal to some constant, ठीक है, K. That is ampere per meter. I mean, if you remember that we did this one, or it means this E1 or E2 जो है, that is same one side to the other side, ठीक है, ये continuous है. On the other hand, the magnetic field is not continuous here, ठीक है, and it's equal to this, ठीक है. So it means magnetic field for one region to the other region, it's not continuous, it is discontinuous. Okay, some direction may change, some addition may have, strength may change, or whatever it is, ठीक है. और K आपको, you know already, ampere per meter, that is surface charge density kind of, and we can also write like this, you can also write. So basically T, what T shows here is tangential components, ठीक है. In the previous slide there was these normal components. We only study the normal components like this, okay? And in this one, tangential components, like in this direction, we studied, okay? So electric field is continuous. In case of a normal, electric field is not continuous. But in case of a tangential component, electric field is continuous, okay? And in case of magnetic field, uh, normal components are continuous, but tangential components are not continuous, ठीक है. So in this way we can understand, if we use certain kind of medium and the waves are propagating, then where it will be continuous and where it will be discontinuous. कहाँ पे हमें waves as it is मिल जाएगी, कौन सी field as it is मिल जाएगी, और कौन सी as it is हमें नहीं मिलेगी, ठीक है. And I mentioned that this is your tangential components, ठीक है. And so what it says, that tangential components of electric vector E, electric field, is always continuous at the boundary surface, ठीक है. And the difference between the tangential components of the magnetic field H is equal to the surface current density K. So कितनी density मतलब करंट की जो है उस सरफेस पे है, it depends on that one, ठीक है. And these problems, these boundary conditions are very important in solving many different kind of wave propagation problems in optics, guided wave optics, or any other kind of electromagnetic waves.
It can be microwaves, it can be radio waves. So especially these are the boundary condition are more important when wave is moving through certain medium, not in the free space, यानी कि मीडियम में है, कोई मीडियम है एंड इट्स अ वेव गाइड और इट्स व्हाटएवर इट इज, सो उसके लिए हमें बाउंड्री कंडीशन स्टडी करनी पड़ती है. और बाउंड्री कंडीशंस आर लाइक इफ यू हैव सीन द fiber optics, it has two layers, cladding and cores, और wave travel करती है like this, ठीक है. So this medium is here, this medium and this medium, ठीक है. So we need to know these boundary conditions to understand how this wave will move in a fiber optics. फाइबर ऑप्टिक्स में कैसे मूव करेगी और उसमें कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है, किस हद तक हमें एज इट इज मिल जाएगी, किस हद हमें लीकेज होगी, वट एवर इट इज, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स. यहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट थे, ठीक है, ऑन दिस स्लाइड, एंड we use the same equations, same Maxwell equations, what we use everywhere. और यहाँ पे इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट्स है जो कि हमने पहले वो सॉल्व कर चुके हुए हैं, ठीक है. So this actually these slides it was kind of view or to show you actually the how important these things are and what exactly these things are. कि ये क्वेश्चन जो हम यहाँ पे लिखते हैं, डिस्कस करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. और बाउंड्री वैल्यू के बाद जो है वो बाउंड्री वैल्यूज फर्दर भी चलेंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी होंगी एंड these kind of things. तो so this was the lecture today. थोड़ा छोटा लेक्चर था, ठीक है. और जो हम फर्दर अब करेंगे वो हम फिजिकली, ठीक है. और नेक्स्ट वीक वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एग्जाम्स एज वेल, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी. और जो आर्टिकल हम स्टडी करेंगे वो टाइम हार्मोनिक्स, ठीक है. और होपफुली क्योंकि वेडनेसडे को तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, आई विल बी ट्रैवलिंग, या मैं जस्ट पहुंचूंगा उस वक्त, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द क्लास, ठीक है. तो क्लास जो है वो आपकी होगी पीर को, मंडे. और डेफिनेटली द टाइमिंग विल बी जो मेंशन की गई है टाइम टेबल पे, उसी टाइम पे स्टार्ट होगी, दैट इज 9:30, इजंट इट? हाँ जी, कोई है उधर, जवाब दे जो. आई थिंक सो सर, 9 बजे है. 9:30 है ना? 9 बजे शायद. 9:30 है जी. 8 से 9:30 बजे तक एक क्लास होती है, फिर उसके बाद 9:30. आसिफ रजा, हाँ ये 9:30 बजे है. और I don't know the room number yet, but I will check when I come there. आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही. मैंने बोला ये एकेडमिक क्लास में है हमारी क्लास. Say it again. हेलो. हाँ दोबारा कहें जरा. मैंने बोला ये एकेडमिक क्लास में हुई है हमारी क्लास. अच्छा अच्छा, एकेडमिक ब्लॉक में है, अच्छा ठीक है. एनीवे आई विल फाइंड इट. तो 9:30 है, तो पीर को फिर इंशाल्लाह 9:30 बजे जो है ना वो मुलाकात होगी. और वेडनेसडे को नहीं है क्लास, तो
if you have any question you can ask, otherwise I will sign off. ठीक है? एक सेकंड मैं जरा आपकी अटेंडेंस देख लूं जरा. एम्बर रियाज हैं? ये ऑन करके आप लोग कितनी वैसे ये आप आई मीन रियली यू आर आप शो करते हैं. इट डजंट मैटर टू मी एक्चुअली. आप अपना ही नुकसान करेंगे ना. अब जो नहीं बोलेगा मैं उसकी एब्सेंट लगाऊंगा. ये मजाक बनाया है वैसे आप लोगों ने ना. कम से कम मास्टर लेवल पे तो आप थोड़े से सीरियस होके. आतिफ अली, प्रेजेंट सर. कोहर राइस हैदर, प्रेजेंट सर. मोहम्मद यासीन. ये मोहम्मद यासीन का कुछ करवा दिया हुआ है. इसने फ्रीज करवा दिया है. आसिफ रजा इसने फ्रीज करवा दिया हुआ है. जी सर, और उसका जो क्लास सर्वर है वो बता रहा था कि इसने एप्लीकेशन दी थी, उसका सेमेस्टर फ्रीज हो गया. अच्छा. ठीक है. ओके सो काजी माजुसलाम ये नहीं है आज ना. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट हूँ आपने सर. अच्छा प्रेजेंट है. हाँ मैं सर लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली सर. वो मैं लेट सोया था तो मैं लेट उठा. सॉरी. अच्छा ओके. अक्सा रहमान, अक्सा रहमान. सर इधर ही हूँ, आवाज नहीं आ रही आपको? हाउ कैन आई नो आप क्या आप इधर ही हैं? जब मुझे आवाज आएगी तो पता चलेगा ना. सॉरी सर, वो इशू था बीच में, नहीं आ गई फोन से. दानियाल इमाम, Yes, sir, present. इबादुर रहमान, यस सर. प्रेजेंट. मोहम्मद उबैदुर रहमान. ये मोहम्मद अबादुर रहमान जो है दैट इज ये पिछले को 3-4 लेक्चर से नहीं आया. काजी माज आपको पता होगा इसका. नहीं सर, नो सर. एमएस का स्टूडेंट. अच्छा एमएस का MS स्टूडेंट. ठीक है. ओके. ताहिर सज्जाद भट्ट, प्रेजेंट सर. आसिफ रजा खान, यस सर. फातिमा इखलाक, प्रेजेंट सर. सर पिछली दफा आप मुझे बार बार आवाज दे रहे थे, इधर से मैं बोलता जा रहा था लेकिन आवाज नहीं जा रही थी. मैंने आपको उसी टाइम मैसेज भी किया था, पहले मैं आपसे बात करता था उनके. अच्छा ठीक है. नजीबुल्लाह. यस सर. ओके ओके ठीक है. इंशाल्लाह विल मीट ऑन मंडे. ठीक है. ओके अल्लाह हाफिज.